screen. Now it is visible. Yes, sir. Now it's visible. ठीक है. So now we are starting from here. ठीक है, creating and moving to directories, the next topic. ठीक है. So for this again we will use a OS module, OS package operating system, or shutil. There are two packages. ठीक है. And the simple statement is either we can use os.rename. os.rename क्या करता है? It just change the name. ठीक है. It is similar to moving. If I will say I have a file और फाइल का नाम है rohit.txt, इसको मूव कर दीजिए किसी और ड्राइव में एंड द न्यू नेम ऑफ द फाइल इज advit.txt. तो क्या करेंगे आप? You can use os.rename and the path of the source file, comma path of the destination file. ठीक है. Second way is you can do shutil, this one. This shutil. ठीक है. Dot move भी just like क्या होता है? Copy paste. Sorry, cut paste, not copy paste. It is just like cut paste. So you are doing cut of for path, that means source file, and pasting on this. ठीक है. और एक और कमांड है os.replace. replace में भी क्या होता है? इसको यहाँ से बस यहाँ पे replace कर दिया this फाइल को. ठीक है. So I will show you this with the program as well. Okay. So and you can see the snapshots from my directory as well. In my directory I have this folder, you can say, and instead of showing this I will directly show to the example. So just see the example here from the Jupyter notebook. Okay, so this is starting. See, clear lecture 32 and 33. From here. ठीक है. I think it is visible. ठीक है. So we are having this file. ठीक है. फाइल का नाम क्या है? sales2.txt. This is the file name. और लोकेशन क्या है फाइल के? इट इज इन माई सी ड्राइव. सी ड्राइव के अंदर मेरे यूजर के अंदर ड्रॉप बॉक्स एक फोल्डर है. उस फोल्डर के अंदर these are the other folders, and in this I am having this file sales2.txt. ठीक है. एंड आई वांट टू क्या करना है? मुझे रिप्लेस करना है. ठीक है. सो कहाँ पे रिप्लेस करना है? आई वांट टू रिप्लेस फ्रॉम दिस पाथ. दिस फाइल को इस फाइल से रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है. सो वी विल यूज आइदर यू कैन. आई विल शो यू वन बाय वन ईच वन ऑफ देम. देखो पहले इसको कमेंट कर देते हैं. ये से os.rename path1, path2. यहाँ से इसको हटा देते हैं. ठीक है. यू कैन सी फाइल्स 2 एक फोल्डर है, मैं दिखाता हूँ. अगर नहीं होगा तो देन वी विल क्रिएट दैट फोल्डर. देखो ये एक फोल्डर है फाइल 2, और अभी मैं इसको खाली कर देता हूँ. ठीक है. कुछ भी नहीं है इसके अंदर. ठीक है. ये फोल्डर खाली है. ओके. सो नाउ वी आर just moving this file from here to here, from here to here we are moving this file. ठीक है. इसको रन करते हैं. ओके. इसमें एरर है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड फाइल्स टू डॉट टी. मैं एक बार चेक करता हूँ. फाइल्स क्या अंदर सेल्स
ओके वो फोल्डर ही आई थिंक डिलीट हो गया। मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस एक फोल्डर है और इसके अंदर एक फाइल है। फाइल का नाम है सेल्स अंडरस्कोर टू डॉट टी एक्स टी। ठीक है, कुछ भी इसमें लिख देते हैं हम, कुछ भी, नथिंग। ठीक है, सो दिस इज, ठीक है। नाउ रन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाली फाइल है हमारे पास, सेल्स अंडरस्कोर टू डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अगेन क्या है, कैन नॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। जस्ट अ मिनट, इसमें फाइल ऑलरेडी है क्या? कि फाइल्स ओके सॉरी, आई थिंक इसमें हमें नाम देना है सेल्स अंडरस्कोर, कुछ भी नाम दे दीजिए। अब इसको रन करते हैं। ओके, नाउ सी। ठीक है, ये रन हुआ। नाउ यू कैन सी हियर, ये फाइल्स यहाँ पर थी, इट डिसअपियर फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से डिसअपियर होती है और देन इट विल गो हियर। क्लियर है ये? Sir, can you explain this again? देखो हमने क्या किया, वी आर हैविंग दिस फाइल सेल्स टू डॉट टी एक्स टी फाइल। ठीक है, और व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस फाइल, ये फाइल जो हमारी लोकेट करती है फाइल्स, एक फोल्डर है, इन दिस फोल्डर वी आर हैविंग दिस फाइल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फाइल को कहीं और मूव करना है। वी वांट टू मूव दिस फाइल फ्रॉम दिस फोल्डर टू अनदर फोल्डर। ठीक है, so this is our destination folder, so we are moving this file from here to here. ठीक है, so for this we will use os.rename source file name comma destination file name. ठीक है, एक दूसरा कमांड है, अगर if you do not want to use this, shutil.move source comma destination, इसको रन करके देखते हैं। एरर क्यों आ रही है, बिकॉज दिस इज हैविंग ऑलरेडी दैट फाइल, उसमें पहले से फाइल है। ठीक है, तो एरर इसलिए क्योंकि हम भी ऑलरेडी मूव्ड दैट फाइल, तो हम फिर से यहाँ से हटा के यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं, देखना। सो नाउ अवर सोर्स फोल्डर इज हैविंग दिस फाइल। ठीक है, फिर से रन करते हैं। नाउ सी, अब कोई भी एरर नहीं है। सो नाउ यू कैन सी द फोल्डर, यहाँ पे फाइल disappear from here and it pasted here. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगेन एक और है os डॉट रिप्लेस, so you can try that one as well, os डॉट रिप्लेस सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन। तो इसको भी ट्राई करना, यू कैन चेक। मैं यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, फिर से इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सी इट इज वर्किंग। ठीक है, देखो। ठीक है, सो देर आर थ्री, एनी वन ऑफ देम यू कैन यूज। ठीक है, फिर इसमें एक और टॉप इसमें था क्रिएट डायरेक्टरी। सो आपको अगर डायरेक्टरी को क्रिएट करना है देन यू कैन यूज दिस, सिंपल है, os डॉट mkdir। ठीक है, तो डायरेक्टरी को क्रिएट करना है os डॉट mkdir रोहित फोल्डर, सो आई एम क्रिएटिंग दिस डायरेक्टरी। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं डायरेक्टरी पहले से अवेलेबल है या नहीं। ये पहले से अवेलेबल है डायरेक्टरी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सो वी हैव डिलीटेड दिस डायरेक्टरी। ठीक है, और नाउ वी आर क्रिएटिंग, सी, os डॉट mkdir ब्रैकेट कोई भी फोल्डर नेम और डायरेक्टरी नेम वॉट एवर। अद्वैत यू कैन राइट अद्वैत नेम, यू कैन राइट देव, यू कैन राइट अक्षित, एनी नेम यू कैन टेक हेयर। ठीक है, सो सी, नाउ सी माई डेस्क, देखो नाउ इट इज क्रिएटेड।
ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Okay, so if this is clear, then next one is, अब हम कुछ और करते हैं। हम क्या करते हैं, वो टू मूव फाइल्स एंड डायरेक्टरी। अभी हमने क्या किया था, सिर्फ फाइल्स को मूव किया था। नाउ वी आर मूविंग डायरेक्टरी एज वेल, वी आर मूविंग डायरेक्टरीज एज वेल। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, सो फॉर दिस, इसके लिए क्या है, shutil.move सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन, और दिस टाइम हमारा जो सोर्स है, इट इज नॉट अ फाइल, इट इज अ डायरेक्टरी। ठीक है, तो और हम डायरेक्टरी हम चेक कर लेते हैं। ये है फाइल्स, ये एक डायरेक्टरी है हमारे पास, एंड हम इसको मूव कर रहे हैं फाइल्स 2 के अंदर। तो फाइल्स 2 के अंदर हम देखते हैं कोई फाइल्स नाम का फोल्डर है, नो। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? we are moving this files folder, we are moving this files folder to any other folder, or you can say we are moving files directory to any other directory। जैसे कि आप लोग कट पेस्ट करते हैं ना, किसी एक फोल्डर को कट किया and then you have pasted that folder to another location, instead of just cut paste in the file, we are just doing cut paste in the directory। जैसे आपने क्या किया, you just cut a movie folder from your C directory and paste it into the D directory or any other in any other directory। ठीक है, so os sorry shutil dot move and bracket source folder name or directory name comma destination directory name, so you can see see, so now this folder is moved into this folder। Can you find files folder here now? Can you find files folder here? I think no, No, sir. है ना, because it is moved into this location। You can see here now there is a file। आप टाइम भी चेक कर सकते हैं, 9:44 I think। मैं इंक्रीज करने का होता है यहाँ, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, बट टाइम नहीं दिखाएगा इसमें। ओके, सो यू कैन सी नाउ दिस फोल्डर इज अवेलेबल हेयर। कब क्रिएट किया हमने, वी हैव क्रिएटेड एट 9:44 अभी जस्ट। ठीक है, क्लियर है? सो दिस वाज द टॉपिक है। सो ये मैंने स्नैपशॉट्स भी लगाए हैं यहाँ पे, यू कैन चेक टू मूव फाइल्स इन द पाइथन। ठीक है, सो यू कैन चेक। ठीक है, इसमें आई एम शोइंग दैट ठीक है वी आर मूविंग अ फाइल फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस, तो मैंने स्नैपशॉट लगाया है, सो यू कैन चेक। ठीक है, ना एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, नाउ यू वांट टू कॉपी। ठीक है, एक और एग्जांपल। सो दिस टाइम हम क्या कर रहे हैं, नाउ लेट अस सपोज यू वांट टू कॉपी ऑल दी सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स फ्रॉम अ डायरेक्टरी। जैसे कि सपोज यू आर हैविंग अ फोल्डर and in this folder you are having folder and files। अभी तक क्या था, in a folder you are having just files। सेकंड केस में क्या था, instead of moving files you are moving the folder। ठीक है, और फोल्डर के अंदर क्या था, फाइल्स थी। अब क्या है, फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है, वी आर हैविंग फोल्डर्स इनसाइड फोल्डर, और यू कैन से वी आर हैविंग सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। Are you getting my points? Yes or no? Yes, sir. तो मैं फिर से क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर। तो नाउ दिस टाइम अब मैं फिर से क्रिएट करता हूँ, फाइल्स फोल्डर क्रिएट किया। इस फाइल्स फोल्डर के अंदर नाउ आई एम क्रिएटिंग फोल्डर। ये क्या नाम रख दें, अद्वैत। एक और फोल्डर कर देते हैं, बस या बी आर नेम इज अक्षित।
ठीक है, एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, देव फाइल्स के अंदर लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। कभी कभी गिव इट गिव्स एरर, परमिशन इज नॉट अवेलेबल टू यू। देखते हैं वो एरर आती है या नहीं, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, या ठीक है। तो सोर्स टू एनी अदर डायरेक्टरी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर है ना टू ऑल ऑफ यू? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना, ठीक है। सो देखते हैं, ओके। या तो आपने अगर नोटिस किया होगा, मैं यहाँ पे shutil.move question mark, and in this you can see shutil.move bracket source comma destination comma copy function, ठीक है। ये क्या करता है, रिकर्सिवली मूव्स अ फाइल और डायरेक्टरी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू यूनिक्स, आपने आई थिंक पढ़ा नहीं होगा, यूनिक्स ओवंटू, जैसे कि जस्ट लाइक ओवंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें एक एमवी कमांड होता है, मूव कमांड, ठीक है। विंडो में आई डू नॉट नो क्या कमांड होता है। सो रिटर्न द फाइल्स और डायरेक्टरीज डेस्टिनेशन, ठीक है। इफ द डेस्टिनेशन इज अ डायरेक्टरी और वॉट एवर, ठीक है, इट मे बी ओवर रिटन डिपेंडिंग ऑन दिस, ठीक है। तो हम सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं, बट दिस टाइम हम ये कॉपी फंक्शन है, कॉपी फंक्शन वी विल यूज एज वेल, ठीक है। तो देखिए, सो नाउ वी आर मूविंग दिस फाइल्स, ठीक है। और यहाँ पे मूव कर रहे हैं फाइल्स 3 में, एक फोल्डर है, ठीक है। और वी आर यूजिंग कॉपी फंक्शन shutil कॉपी ट्री, ठीक है। So you can check this as well. What is shutil dot copy tree? ठीक है, there are a lot of modules available actually, and no one can remember. So source destination, ignore copy function, this recursively copy a directory tree. मतलब अगर directory के अंदर you are having directory, then this is applicable here. Directory tree and return the destination directory. ठीक है, clear? So now we are running this and see what happened. Okay, this successfully run and you can see now files 3, ये जो है ना files 3 destination, I will show you. So see, this is files 3 और files disappear हो गया यहाँ से, you can see files disappear and this files is moved here. देखो ये files के अंदर मैंने अद्वैत, अक्षित और देव, there are 3 things. Yes or no? Clear है ये? This one is clear? Yes, sir. ठीक है, Sir, हाँ, yes. sir, can you explain this again? या ठीक है, देखो, सो इन दिस डायरेक्टरी वी वर हैविंग अ फोल्डर, उस फोल्डर का नाम क्या था, मैं यहाँ से कट पेस्ट कर देता हूँ। इस फोल्डर का नाम था ये, दिस फाइल्स फोल्डर, ठीक है। और यू कैन से फाइल्स डायरेक्टरी, ठीक है। इन दिस फाइल्स डायरेक्टरी वी आर हैविंग सब डायरेक्टरी एज वेल, क्या है, वन मोर डायरेक्टरी इज अद्वैत, फिर एक डायरेक्टरी अक्षित एंड फाइल्स एज वेल, ठीक है। सो नाउ दिस टाइम वी आर मूविंग directories and subdirectories recursively, ठीक है। folder inside folder inside folder, folder inside file. So instead of just moving a directory, we are moving directory recursively, ठीक है। So we are moving this file to this folder directory to another location.
और अनदर लोकेशन क्या है हमारी, वी आर मूविंग इन दिस लोकेशन। किसी और लोकेशन में मूव करना है, यू कैन मूव टू दैट लोकेशन एज वेल। ठीक है, तो जब So, इसको रन करें, हाँ यस, sir, we are moving the files folder to files 3. यस फाइल्स 3 में। Okay. ठीक है, तो इसको जैसे हमने रन किया है यहाँ पे, तो you can see this files directly disappear from here, you cannot find this। ठीक है, now this is moved into files 3 directory। आप देखिए यहाँ पे, is it available? ठीक है, और जो भी कंटेंट था, the content inside this files is also moved, you can see। मतलब you are moving directories, sub directories recursively। ठीक है, do you want to see that command in Unix, मतलब ubuntu में, do you want to see? ठीक है। Yes, sir. Okay, for that I need to start my ubuntu operating system, it will take just 1 minute। Okay. Yeah, so I'm starting my another operating system। Okay, virtual, do you want to allow this to make changes to you? I think my screen is visible, हाँ visible है। क्या हो रहा है? ओके, ठीक है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, टर्मिनल, एक टर्मिनल आपको विजिबल होगा। ठीक है, दिस टर्मिनल इज विजिबल टू यू। Yes, sir. मैं देख रहा हूँ कहीं से देयर में भी ऑप्शन टू इंक्रीज द साइज। ओके, यहाँ से ठीक है। ओके, तो हम पहले कोई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अभी कोई फाइल नहीं है एमपीटी, तो जैसे कि नोटपैड होता है इन विंडो, इन उबंटू वी आर हैविंग जी एडिट। कोई फाइल क्रिएट करते हैं, रोहित डॉट टी एक्स टी, कुछ भी लिख देते हैं। माई नेम इज, मैं देख रहा हूँ फॉन्ट साइज बढ़ाना। ओके, टूल्स, नो, या फॉन्ट एंड कलर, तो फॉन्ट, ओके ओके, थोड़ा बड़ा कर देना, बड़ा हो रहा है ये। ओके, ठीक है, सो माय नेम इज रोहित, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड दिस फाइल रोहित डॉट टी एक्स टी। कहाँ पर है? डेस्कटॉप पर। आई थिंक यू कैन सी। नाउ वी आर मूविंग दिस फाइल टू अनदर लोकेशन। तो लोकेशन मुझे चेक करना होगा, एक फोल्डर और बना लेते हैं, mkdir। जैसे कि मैंने बताया ना, इन विंडो python os.mkdir to create a directory, same thing is in ubuntu available। You no need to write a program, mkdir, and I'm creating my folder rohit folder। so you can see rohit folder create हो गया। ठीक है, now we are moving this file रोहित डॉट टी एक्स टी फाइल, कहाँ पे मूव कर रहा हूँ मैं? आई एम मूविंग टू दिस लोकेशन। see, देखो गायब।
Rohit.txt is disappeared from here and it is moved to this folder. You can see यहाँ पर आ गई. Clear है ना? Yes, sir. है ना? तो सेम थिंग्स आर अवेलेबल mkdir में. और चेक करता हूँ व्हाट आई कैन शो यू. रोहित फोल्डर, एक नया फोल्डर बनाते हैं, रोहित फोल्डर 2, एंड मूव फोल्डर को मूव करते हैं. रोहित फोल्डर को रोहित फोल्डर 2 में मूव करते हैं. यू कैन सी जो रोहित फोल्डर था, द डायरेक्टरी इज मूव्ड. कहाँ पे मूव किया? रोहित फोल्डर 2. देखिए, you can see it is moved here. ठीक है. तो same thing we are doing using the Python program that is available in Ubuntu operating system. These are also available in your Windows operating system, but I need to check the command. When I am familiar with Ubuntu, that's why I showed. Clear? ये clear है ना? Then can I shut down this? Yes, sir. है ना? So yes, तो ठीक है. So we have done these things. ठीक है. Now the next topic is traversing a directory tree list. ठीक है. मैंने क्या किया, जस्ट आपको एक सिंपल मूव ही नहीं दिखाया. आई जस्ट शो यू हाउ टू मूव डायरेक्टरी, फिर सब डायरेक्टरी कैसे मूव करते हैं. सो यू कैन प्रैक्टिस. नाउ ट्रैवर्सिंग डायरेक्टरी लिस्ट ऑपरेशन. ठीक है. सो ट्रैवर्सिंग डायरेक्टरी tree means you just displaying the content of all the directories, subdirectories. कैसे उसको देखना है, whether they are for so you are having subdirectory or there is a file inside it. So you are just checking all the things using the Python program. ठीक है. So for this there is a module that is called os.walk. os.walk. ठीक है. os.walk method of os module, ये small में होता है. ठीक है. os module. OS stand for operating system. एक subject है and this might be in your second or third year. OS module can be used for listing out all the directories. So os.walk is used to list out all the directories. ठीक है. This method basically generate file names in the directory tree either top down or bottom up. Top down or bottom up, don't think too much about this. जब आप एक subject पढ़ेंगे design and analysis of algorithm, then in that subject there are two approach. One is top down and second one is bottom up. Bottom up. ठीक है. So then in that subject you will learn in detail what is top down approach to write up algorithm, or what is a bottom up approach. ठीक है. So just forget this. ठीक है. For each directory in the tree rooted at directory top. इसका मतलब क्या हुआ कि rooted directory top nothing, it just the source path from where you are starting. ठीक है. If you are starting from C directory तो root directory क्या होगी? seed. If you are starting from C के अंदर there is a folder Rohit folder, so that will be your rooted directory, nothing else. ठीक है. ओके. इंक्लूडिंग टॉप itself. ठीक है. इट yields a 3 tuple. ये आउटपुट क्या देगा? इट विल गिव यू दिस डायरेक्टरी का पाथ, it will give you the directory name and it will give you the file names. ठीक है. What will be the return? What it will return? It will return three things: directory का path, string that is the path of the directory. ठीक है. Then it will return the directory name, all the subdirectories. ठीक है. And it will return all the files from the root directories. Clear है? So can we start my Jupyter notebook to show this?
this is the syntax os.walk, os.walk, and this. So you no need to worry about all these things. No need to worry about all these things. You can skip all these things. You just need to remember os.walk ब्रैकेट के अंदर path. टॉप क्या टॉप मैंने पाथ का नाम दिया है यहाँ पे. सो यू कैन राइट योर पाथ. ठीक है. सो दिस इज द सिंटैक्स है. सो वी आर मूविंग डायरेक्टली. ठीक है. सो सी द हियर. ओके कहाँ पे था या. ठीक है. सो देखिए दिस इज माई पाथ हेयर. This is my path and I want to list or I want to traverse all the directories and subdirectories and files inside this path. Okay, my path is clear to you. This path is एक lecture folder है. Lecture folder के अंदर there is a directory that is files 3. So you can see here yeah this one. ठीक है. So we are displaying all these things. ठीक है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. सो क्या कमांड है os.walk ब्रैकेट के अंदर द पाथ os.walk एंड पाथ. ठीक है. सो व्हाट इट विल रिटर्न 3 थिंग्स. फर्स्ट क्या देगा इट विल गिव यू द रूट और यू कैन से फर्स्ट इट विल गिव यू a string that is the path of the directory. First क्या देगा it will give you the path of the directory. Second it will give you all the subdirectories and third it will give you the file name. ठीक है. So that's why I have written 3 things here. You can write any name here. आप अपना नाम भी लिख सकते हो. You can write my name as well. ये root की जगह है. ठीक है. तो root means just the path name. फिर ये क्या देगा it is a directory name and it is these are the files name. ठीक है. so it will give you 3 things. ठीक है. और for loop क्योंकि you do not know how many directories subdirectories are there. You do not know. ठीक है. in my files 3 directory there may be 10 subdirectory, there may be 20 subdirectory और उसके अंदर भी may be hundreds files हो सकती है 200 files हो सकती है. You do not know. ठीक है. so it will iterate until it will find nothing. Clear है this statement is clear. Hello. Yes, sir. ठीक है. so this is the path name. This is the second one is the directory name. Third one is the file name. ठीक है. और इनको we are printing. so इसको प्रिंट करते हैं and then we will see. now कुछ और आउटपुट है और देखते हैं कहाँ ये है. see. तो now this is telling कि what is my path. ये मेरा path है. this is my path. ठीक है. and what is my directory names. इसके अंदर आप देख सकते हैं there are मैं शो करके दिखाता हूँ. you can see A, B and files. there are 3 directories. so देखिए second output क्या है आपका. there are 3 directories A, B and files. ठीक है. this is a list of all the directories name. ठीक है. and third one it will give you the file name. so हमारे we are having 2 files ab.txt and second one is ac.txt. तो आप यहाँ पे देखिए ab.txt and ac.txt. ठीक है. now it will go inside A. नेक्स्ट टाइम जब फॉर लूप चलेगा देन इट विल गो इनसाइड ए के अंदर जाएगा. सो व्हाट विल बी द पाथ नेम. व्हाट विल बी द पाथ. पाथ क्या होगा. दिस इज द पाथ. ठीक है. क्लियर. नाउ इनसाइड दिस ए कोई और सब डायरेक्टरी है क्या. नहीं इसके अंदर एक फाइल है. ठीक है. सो सेकेंड आउटपुट आपका क्या आया एम्प्टी. क्यों. बिकॉज इनसाइड दिस ए डायरेक्टरी देर इज नथिंग. कुछ भी नहीं है उसके अंदर.
ठीक है, there is no subdirectory, ठीक है, so there is no directory, so this is empty, and inside this A you are having one file df.txt, that's why this is the output, ठीक है, clear है, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next it will go inside B, क्योंकि next यहाँ पे कौन सा direct, next is the B सब directory, ठीक है, तो it will go inside B, तो B के अंदर गया, so this is the path, फिर उसके अंदर B में उसने चेक किया whether there is any sub directory or not, तो कोई भी sub directory नहीं है, and whether there is any file or not, no there is no file, graphically you can check, it will go inside B or B empty, कुछ भी नहीं है, there is nothing, ठीक है, so the second output, second is empty and third is empty, ठीक है, next it will go inside this files के अंदर जाएगा, so in this files you can say this is the path here, this is the path here, and in this files there are two subdirectories, Advait and Akshit, you can see here ये files है, and we are going inside this file, so there is Advait and Akshit, two subdirectory, ठीक है, and one file dev, so you can see the output here, Advait Akshit directories and dev.txt is the file, fine, now it will go inside this Advait as well, so Advait के अंदर गया, ठीक है, और अद्वैत के अंदर क्या, एंड देन इट विल चेक वेदर इनसाइड दिस अद्वैत देर इज एनी सब डायरेक्टरी, नो देर इज नथिंग, देर इज एनी फाइल, नो देर इज नथिंग, ठीक है, फिर देन इट विल गो इनसाइड अक्षित, दिस इज द पाथ नेम, और फिर इनसाइड दिस अक्षित देर इज एनी सब डायरेक्टरी, नो देर इज एनी फाइल, नो, ठीक है, यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम हेयर, अद्वैत empty, अक्षित empty, ठीक है, क्लियर है, दिस कोड मतलब कोड क्या है, 2-3 लाइंस का है, Yes, sir. क्लियर है, Yes. ठीक है, Excuse me, sir. हाँ, यस, Sir, you are discussing which module? OS मॉड्यूल os.walk, I mean, in course. अच्छा कोर्स में Which मैंने module? आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हाँ, मैं 5 मिनट बाद में आया था. ओके, सी स्टार्टिंग में आई हैव डिस्कस्ड, okay, so we were discussing this traversing directory tree, okay, sorry, yeah, so we are discussing this one, the highlighted traversing directory tree, Sir, is this chapter in it is a module Python 3, package? ये आपका फाइल हैंडलिंग के अंदर आना चाहिए, बट देयर इज अ सेपरेट मॉड्यूल, operating system module, so we are discussing operating system module. I think in file handling not given fully. In teaching Python, Python. then actually, so you can follow another book or you can follow internet, ठीक है, it took me a lot of time to prepare these notes because the content were not available in a single place, मतलब कि I followed some book, so the content was not available in a single place according to your syllabus, so it took me a lot of time to prepare, same thing for the package as well, ठीक है, पैकेज एक सिंपली बताना, मैं इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस सिंपली पैकेज बताना, these are the packages different thing, but I will show you how to create your own package, I will show you the existing package location where they are in my system, you can create your own package, you can use that package in different programs, वहाँ पे भी आप you can use, so I will show you that things as well in the next lecture, ठीक है, तो ये क्लियर है,
मैं एक आई वॉज सर्चिंग अ प्रोग्राम, मैंने एक प्रोग्राम बताया था एंड दिस थिंग बी डिड यूजिंग अवर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्लियर है ना आपको? ये सिंपल 2-3 लाइंस ऑफ कोड, ये क्लियर है ना? Yes, sir. Yeah, this is clear. Yes, Just sir. a minute, just give me 1 minute. I am trying to search something. Hmm. Define mock. If you remember, मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था in your earlier classes to demonstrate these functions. The following walkthrough directory print. Okay, just a minute. आपको if you remember, ये प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, just a minute. Okay. Same code. क्या पाथ लेना है? दिस पाथ, ठीक है। आई एम जस्ट चेकिंग वेदर दिस इज सेम और समथिंग एल्स। ओके, सो करंट वर्किंग इंस्टेड ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, आई वांट टू यूज path underscore f1, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम था समथिंग समथिंग सेम था बट थोड़ा सा डिफरेंट है। नो, कहाँ गया? जस्ट अ मिनट। files 3 lecture file a can you see there's something similarity between this walk and this program we have written in our earlier classes? ये भी क्या कर रहा है? we are just printing here only the files, हम we are not printing subdirectories। आप देखिए, this is our inside a folder there is a df.txt, inside this files there is a ab.txt, inside this files ac.txt, and inside this files 3 files and dev.txt. There are 4 txt files, and in this program you can see as well 1 txt file, 2 txt files, and 4 txt files are there. So same thing, मतलब something similar to this we have already written in our earlier classes, if you remember. ये याद है आपको? हमने क्लास में किया था। Instead of using this walk os.walk, we have created our own function। हमने अपना function बनाया था and we called this function using any path। फिर हमने क्या किया था? We have used list dir to list the directories। फिर हमने क्या किया था? We use os.path.join to join the directory name with directory। और फिर उसके अंदर जो भी फाइल्स थी हमने वी हैव जस्ट डिस्प्लेड दैट फाइल्स, इफ यू रिमेंबर। और इफ यू डू नॉट रिमेंबर देन वी कैन स्किप। हमारे नोट्स में है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। यू कैन सी किसने लेक्चर 28 में था दिस वाज, ठीक है। डू यू रिमेंबर? Yes. ठीक है। समथिंग सिमिलर टू दैट वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। हमने क्या किया था? वी जस्ट वॉक थ्रू अ डायरेक्टरी एंड वी जस्ट प्रिंटेड ऑल द फाइल्स और उसको रिकर्सिवली कॉल। जैसे कि if we talk about this files 3, तो we are just use this files 3 and in this files 3 whatever files are available, ठीक है। सपोज एक डायरेक्टरी है ए के अंदर कोई भी फाइल है, देन वी हैव डिस्प्लेड दैट। बी के अंदर गए, इफ देयर इज एनी फाइल, नो। फाइल्स के अंदर गए, अद्वित, नो। Akshit, no. Dev, yes, we have printed this. Then we have printed ab.txt, then we have printed ac.txt. So we are just printing all the files available in a directory and subdirectory recursively. ठीक है? So similar to that.
So I have pasted here. Question भी मैं paste कर देता हूँ. So because I will upload this, so you can practice. ओके ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके सिलेबस में. ओके so ये क्लियर है, ये क्लियर, ये क्लियर. ठीक है, एक प्रोग्राम और देख लेते हैं. ठीक है, एक प्रोग्राम और देखते हैं. ठीक है, सो सी, सो दिस टाइम सेम प्रोग्राम है, बस इस बार हम उसको एक लिस्ट में भी आर पेंडिंग दिस. सो सेम प्रोग्राम, सेम पाथ, सेम थिंग for three things: root, directory and files in os.walk. Instead of printing we are just appending in a list. तो nothing special. हाँ, मैं ये कहता कि we can shorten this program. ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है, this one, we can shorten this program. कैसे? See here, only this single line of code. ठीक है, कैसे? We use what? There are three things. ठीक है, path name, path name, this is the path name, this is the directory names, this is the files name. ठीक है, for this in os.walk. और इन सबको हमने क्या किया, एक टपल में स्टोर किया, एंड ऑल द टपल्स वी हैव अपेंडेड इन अ लिस्ट. सो वही जो थ्री लाइन्स का है, मतलब उसको थोड़ा लिस्ट कंप्रेंशन, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम अवर अर्लियर लेक्चर, लिस्ट कंप्रेंशन याद है? यस सर. बस तो बी जस्ट यूज लिस्ट कंप्रेंशन, उसको यूज किया, सेम थिंग, सेम प्रोग्राम है, नथिंग एल्स. यू कैन सी दिस आउटपुट, ये आउटपुट, एंड दिस आउटपुट, यू कैन सी सेम है, सेम आउटपुट है. ठीक है, तो नथिंग बट अनदर वे टू राइट योर कोड. ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. वी कैन मेक अ फुल पाथ फॉर ईच फाइल. नाउ दिस टाइम हम क्या कर रहे हैं, जो फाइल थी हमारी, सो नाउ दिस टाइम वी आर जस्ट राइटिंग द फुल पाथ. तो आपको याद होगा os.path.join मॉड्यूल. ठीक है, so again the same thing for root, directory name, files name in os.walk, the path. ठीक है, now these are the our files, f.names में हमारी files हैं. So again we use a different for loop for f in f names. मतलब कि now instead of printing all the files, we are taking each file at a time. We are taking each file at a time. जैसे कि first we will have this file ab.txt, then we will have this file ac.txt, and then another file, I think df.txt, and so on. So this time we are taking each file at a time. ठीक है, and we are just we are just joining their path. पूरा path जो है ना, we are just joining them. So instead of just printing the file name, file को we are just printing with the full path. तो जो ab.txt है, what is the full path? This is the full path of ab.txt. ठीक है, इसको रन करते हैं. So you can see ab.txt full path क्या है? This is the full path. ठीक है, the second file क्या है? ac.txt. This is ac.txt, full path है ये. This is the full path. Second file थी हमारी df.txt, तो you can see df.txt full path, and fourth file थी dev.txt. So this time instead of printing just the file name, we are printing the file name with the full path. ठीक है, clear? Now this we will discuss in the next lecture. Clear है यहाँ तक? Yes or no? Yes. Okay, ठीक है then. Bye bye.
Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Any doubt you can ask? Anything you want to ask? Okay, then we can stop the recording here.